क्या है तुम्हारा फोन के साथ, तुम फ्री है क्या? हाँ बोलने दे उसको, नॉट वेल। वंडरफुल वंडरफुल, हाउ मच यू गॉट? हाँ किधर था तू? Oh, wonderful, good. मेरे तरफ से बात। I had gone out of town. I was in Bangalore for a small seminar and family. But हाँ मैं एक वीक के लिए छुट्टी पे था। I came back Monday, Tuesday morning only. As if he was missing me. I was also missing you all. Sir, 2 क्लास तक 3 घंटे ज्योग्राफी नॉनस्टॉप पढ़ना पड़ा। तो अच्छा है ना? अरे भैया अच्छा है ना, पोर्शन आगे गया ना। चलिए, थैंक यू। I am highly respectful for the love and affection that you guys have given. I will be more happy if you remain silent and get me more good marks like I forgot your name. Wonderful. Chaliye, let's pick up the books. देखो, जो रेस्पेक्ट मुझे मिलना चाहिए मेरे बच्चों को मिल रहा है, और कैसे? वंडरफुल। चलो, जो भी 15 out of 15 and 20 out of 20 and 10 out of 10 इस बार खिलाते हैं। 15 out of 20। मैं सबको जिस दिन मैं कुछ चॉकलेट वगैरह लाएगा, I will give it to you। 15 out of 20। वंडरफुल। तू भी कभी लाना, उसका क्या बोल रहा है? सर मैंने टेस्ट भी दिया। Wonderful. Score 100% there also. Yes, sir. Hey, listen, the portion, there have been some good things for you. Almost in few chapters in history, only 2 to 3 pages. Hi, Swastika. Hello, sir. Good evening. I'm so sorry. मैंने आपको देखा नहीं। कैसा चल रहा है स्वास्तिका का स्टडीज? स्कूल का नहीं मिला क्या? ओए, pick up the history bullet. I was doing president and वही है ना? कंप्लीट हो गया। मालूम है, आज उस बारे में कम बात करेंगे। We have done only introduction to the president. You have given 1, 2, 3, 4. Okay, wonderful. Hey, listen, guys, listen. When I use the word president, now this president, Mr. Ramnath Kovind, his term is. Good evening, sir. Good evening. Hi, Akansha. Oh, very good. पहला किया मैंने। ठीक है, फिर आज जल्दी भगा दे। Hi, Akansha. Got any school marks? Sir, I got history class test marks. I told you last time. I don't remember. Getting older soon, is it? How much you got here? Sir, 9.5 out of 10. Wonderful. Swastika? I'll check. Just a minute. Okay, you check it later. Hey, come on. As my good student is saying, we have already done little bit of precedent. Shall I? This president, Mr. Ramnath Kovind, is going to, his term is going to come to end this July only. And already opposition में बहुत गर्मा गर्मी चल रहा है। कोई बोल रहा है कि शरद पवार को खड़ा करो, कोई बोल रहा है वो जो रवीना टंडन को तो आजकल प्रोड्यूसर भी खड़ा नहीं करता। किसने रवीना टंडन को याद किया? हाँ, ठीक है। So you please watch the election, because the election to the president of India is not like the election of the prime minister. I will show you a small video when I am teaching you the election. It is indirect election. Electoral college है। आप लोग पहले अपना ये सब काम मैं करूं, तुम लोग का नहीं ना। Allow me to teach ना। तेरा परमिशन लेना जरूर। हाँ बस, तू मेरा दादा दिखता है ना? नहीं जो 15-25 साल पहले चले गए, तो तू
तब नहीं जा रहा है ना, तो इधर ही बैठे। हाँ थैंक यू। तो अगले 200 साल जिए, अगले 200 साल जिए और जितना तक जिए मेरा स्टूडेंट बनकर ही जिए। नहीं बट उतना 200 साल मैं रहेगा क्या? दैट इज द क्वेश्चन। Okay, let us come back to election of the president is indirect, unlike the prime minister. Then the question is indirect means what? It is the Lok Sabha MP and Rajya Sabha MP along with the legislature. It is not like one vote, one value. It is different. The calculation of the votes are based on the number of members of Lok Sabha divided by the members of the legislative assembly. अभी जैसा महाराष्ट्र का जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग 252 से डिवाइड करेंगे। 252 मतलब हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ है, और जो भी नंबर मिलेगा, फॉर एग्जांपल एक 5000 मिला एक नंबर, तो एक एमएलए अगर महाराष्ट्र से वोट करेगा तो 5000 वोट्स जाएगा प्रेसिडेंट को। अभी ये क्यों आप एक वोट 5000, बिकॉज देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। अभी प्राइम मिनिस्टर बीइंग डायरेक्टली इलेक्टेड, he might have won the election by 5000, 15000 or 15 lakh votes. अभी प्रेसिडेंट जाके बोल रहा है मुझे तो सिर्फ 225 में से 15 लोग ने वोट दिया। How cheap it looks. So for that system only they have made this. तो अभी समझा, ये तो स्टेट का हो गया। स्टेट का जितना भी स्टेट है इंडिया में 29 स्टेट्स का नंबर मिलाएंगे, that will be divided by the 550. Why 550? लोकसभा का सीट। तो लोकसभा का एक एमपी ने अगर वोट दिया, फॉर एग्जांपल 15000 आया, तो एक वोट आके 15000 वोट गिना जाए। समझ में आया? मैं एकदम आपका लोकल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई टू गिव इट। So this is how the election to the president is done in India. Once he is elected, he remains in the office for the next 5 years. Then you should ask me, how do we calculate 5 years? तो बच्चा उठ के बोला 1 2 3 4 5, उसमें क्या बड़ी बात? Wonderful. The day when he enters into his office, from the day when he enters into his office till the time he is exiting. अभी जैसा हमारा स्टूडेंट की तरह मुझे दिखते हैं, पहले तुरंत सर वॉशरूम जाऊंगा, वो भाग जाते थे। मैं भी रामनाथ कोविंद जी ने ऑफिस में रखा, शायद उनका पेट में गड़बड़ है, फिर निकल के बाहर, फिर 2 दिन के बाद ही आएगा। ऐसा नहीं होता है, वो चुपचाप जाता है अंदर। Okay, so we always believe that president is a very very important officer in हमारे दोनों बंधु लोग क्या डिस्कस करते हैं? ठीक है, इट्स हाँ इट्स क्यों तू कौन सा है? कोई टॉपर नहीं, सब एक ही है, तू चुपचाप है बस। So president has different powers. Did we discuss the powers and functions of president? Little bit. Now put the heading in your notebook. Powers and functions of president. हाँ, सबहेडिंग बाद में करेंगे, अभी ये बहुत important है। क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछता रहता है। Very good. Powers and functions of president. I'm going to keep the heading that we will read and understand. Oh my God. Pen भी नहीं लाया? नहीं लाया। सर वो कभी नहीं लाता। नहीं, he is a very smart fellow. रुकते उसका smartness का होता था। हाँ तो सब दो। It's like that barber salon fellow coming to the house without a scissor in his hand. Write down first heading. Sir सिर्फ introduction हुआ था। हाँ मैं कर रहा हूँ, पूरा ही तो कर रहा हूँ। You write down first heading. Executive powers. Powers of parliament. President man. ये इतना innocent बच्चा कहाँ से पकड़ के लाया? नहीं अभी confused हो गया बीच में। Executive powers. And right below, I'm going to give 2 points each. 1 and 2. Executive powers of the president. Point number 1. जो मालूम है नहीं बोले, हाँ करेक्ट, हमारा शागिर्द बेटे, मेरे वक्त या मैं आपका। पॉइंट नंबर 1, he is the supreme commander. He is the supreme commander. मिलिट्री पास में आके बनी चल, ठीक है तो बोलते हैं इसको तो सही बेटा। ऑफ आर्मी, नेवी एंड
Air Force. Of Army, Navy, and Air Force. Hyphen. He appoints the head of these three wings. He appoints the head, मतलब सबसे topmost officer. Three wings. Sir, मतलब ये कुछ भी बोलेगा. नहीं ऐसा तुम जैसा बोलते वैसा नहीं बोलेगा. मैं simple way में समझाता हूँ. अभी everyone is interested to join our army, navy and air force. At least एक साल तो हम अपना देश के लिए सेवा करें. तुरंत बच्चा बोलते घर के लिए कुछ नहीं किया, देश के लिए क्या करेंगे? है ना? Now the government of India is bringing some new bill, जिसके लिए अभी बिहार में आज तोड़फोड़ चल रहा है. हाँ, वो मैं बताता हूँ क्या है. Yeah, it is very good. After when you become 17 and a half years till you do 22, you can remain in army, navy or air force. As you are Agni Pariksha scheme का नाम है. You are going to work for 3 wings at least for 4 years. नहीं compulsory नहीं, उसका selection वगैरह होगा. And if you are doing splendidly well, you may be continued for you may be continued. तो जितना भी होगा उसका only 25% आगे बढ़ेगा. बाकी लोगों को government retirement दे देगा. Afterwards you can get into a government job respectedly. And every person will get 11.5 lakhs of rupees full-time pension. And per month your payment will be close to 36,000 first year and 30,000 in next year something. I'm saying per month. But अभी ये scheme हमारे Indians को कुछ state को पसंद नहीं आया. नहीं करेंगे हम. ये 4 साल क्यों दे रहे हैं? हमको जिंदगी भर के लिए दो. यार ये हाँ ये हमारा गवर्नमेंट है, हमारा जो पीपल है ना, कुछ ना कुछ तो करना ही. मैं तो बोल रहा हूँ इन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, NS is compulsory, national service बोलते हैं. After your 10th standard, next 3 years you are compulsorily going and joining this military, army and navy. करना ही पड़ेगा. हाँ. Sir, except India, some countries have a martial law that after the schooling they have to do like Ukraine. Correct. And they have to do the basic defense work. Correct. Let him say. So that's why we are saying that although Israel is a small country, it's a powerful. Correct. Wonderful. Thank you. Good boy. Sanjay, Akansha, Swastika को marks मिला, क्या कर रही हो? Sir, I got 18 out of 20. Oh my God! Relax, chill. Good. So देखो, in India, if I ask the child what is the meaning of the word CPR, है ना? वो तुरंत जाके उसका छाती दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है, उसको तो नहीं मार डालेगा. First aid कैसा देने का? तो ऊपर से धक्का मारने का, वही first aid है. We have a paper in CBSE called disaster management. DM बोलते हैं हम लोग. मतलब क्या है? When there is an earthquake or when there is a volcano, how would you behave? हमारा बच्चा बोलता है, when I got fail marks in my house, I get वो disaster management चाहिए, है ना? ये लाइफ में जरूरी है. भाई साहब को बहुत तकलीफ होता है. So when I use the word President of India, he is no ordinary citizen. He is the first citizen of India. You must at least once in your life, whoever is the president, कभी उनका at least parade देखना. You will see amount of horse riders, the cavalry, the amount of cars, the security he gets, and the respect he commands. No doubt, Prime Minister will never get. The Prime Minister has. उसका अलग रहता है. President मतलब is an imaginary, superficial Superman of our country. And his wife is considered to be the second citizen. Because why we are giving so much importance? President means India. India means president. So if I say the word executive powers, he has important decisions to take. The decisions which will show the might of the country called India. We had wonderful presidents of the past, and we will have some future good presidents. That's what we believe. Correct? Nobody can forget Sarvapalli Radhakrishnan. Yes. We celebrate his birthday as the Teachers' Day. APJ Abdul Kalam is no short of introduction.
He was no more a missile man, but when he was a president of India, he was considered to be the most popular president. So he is the one with no haters. Correct. Everyone, every party loved him. Wherever he has gone, not only in India, any part of the world. Correct. He made it a point to meet the school children. And if you read his books and listen to his speeches, it's as good as saying that he was a living legend. But when he died, a big statue was erected in his birthplace. And whose statue ke upar bhi controversy? The controversy was that in the statue hand, there was a Bhagavad Gita, for which the Muslim community did not like it. ये हमारा मुश्किल है कुरान रखने का बोला, but his own brother, elder brother, is still living. अगर आप उसका business पूछेगा तब हंसेगा. He has an old bicycle shop. नया bicycle shop भी नहीं है, old है बेचारा. अभी भी जिंदा उसी पे है. When he was a president of India, I happened to go to his hometown, not invited by him. I went for some other work. His house was not even having painting, only white color चूना लगा था. उसका घर, उसका आधा से ज्यादा सैलरी तो पूरा चैरिटी में जाता था. When he retired as a president, he had only 4 pairs of dress and 2 pairs of shoes. And he would take it. इतना ही उसका property. So this, nothing. This was But the lots of books. What happened? But lots of books. Good, lots of books. There go how swastika beautifully coming up with the line. Sir, you introduced democratic alliance. No. That is different. We always believe president commands a respect no other minister in our country have it, because he is not a political person. He is a person who commands a great respect because he has come to that position not by crook, but by his hard work. Not by standing in the election and winning the votes by giving money or some other thing. He has come purely on his merit. The hard work is always respected. You feel hard work always gets rewarded? Yes. Sooner or later, you do hard work today, you forget me, no issues. Maybe next 10 years down the line, the place that you be, place yourself. You'll remember, हाँ, उस दिन वो चिल्ला कर बोल रहा था. है ना? Abdul Kalam said that the brightest mind are in the back benches of the class. Oh, ऐसा कुछ नहीं. इसका मतलब तुम जाके लिखो. मैं फर्स्ट पोस्टर डाला है वही पढ़ लिया. हाँ, एक मिनट रहने देना बोलता रहिए. So now we know see that this is the end of the office of Ramnath Kovind. Yes, and we'll have a new president. So will Ramnath Kovind has become Wonderful question. Thank you. I'll explain. When APJ Abdul Kalam's term was coming to an end, it was AB Vajpayee. He wanted him to continue the next election. He can put up his name. And he could have easily won the election. But APJ said, I am away from politics. And we had the first lady president. That also I'll show you all the presidents. Now, if Ramnath Kovind is interested to recontest, he has every right. He can go for it. But generally, देखा गया है एक बार president बन जाता था, other time they generally do not. But they have a provision because अभी कैसे बोलूं, this president's office is not a very ordinary office. हमको लगता है कि वो खाली है, कुछ काम नहीं करता prime minister ही. But he has his own commitments and appointments. And let me tell you, whether the prime minister has his name in the golden history of India or not, but president has it. And till he is alive, a big pension goes to him. And even after his death, a very big pension goes to his wife also. And let me tell you, any time of his life he died, he will get a national salute from the government. 19 cannons, you know that gunshots, he will get it. और क्या चाहिए? Prime Minister को नहीं मिलेगा. अगर Prime Minister is dying when he is alive, when he is alive in the office, on duty, alive in the office. Thank you. So we can say as a guard of honor. Guard of honor, correct. So that is what we see. Very few presidents have turned back. But then he has an option. If he wants, he can continue. If not, he can go away, saying very politely कि मैंने अपना 5 साल का term अच्छे से किया and I really respected and whatever. अभी आप इसका इनका closing speech भी देखना. And it's always a very emotional and wonderful ceremony. And you must watch it. And I'm purposely saying this time election जो भी हो रहा है ना, आप लोग देखना, टीवी में लोग दिखाते हैं कि कैसा voting हो रहा है, कैसे elections हो रहा है, एक vote क्या कर रहा है, मैं भी बताऊंगा. And I want at least one more better president coming, better than Ramnath Kovind.
But definitely I don't want any person like this opposition या ममता का group अभी planning चालू है. Yes. For the nominees, he has to complete 35 years of age. Indian citizen 35 years of age. अभी मैं दूंगा qualification. Nominee पूछ रहा है. अभी nominee decide नहीं हुआ. There are 2 more weeks to file the nominees. अभी तक decide नहीं हुआ. अभी opposition plan कर रहा है. वो चौलबना है लेडी प्लान कर रही है. कुछ ना कुछ तो कबाड़ा करना है. हाँ दीदी. Let's we proceed. हाँ चलिए let's we proceed. Second point. I can keep on talking, but my chapters will be remaining uncompleted. Talking नहीं है, sorry, lecturing. Second point, हाँ जी. Army, Navy and Air Force. यार तू ये छोड़ दिया बाकी सब पूछ रहा. It's okay. Thank you. Next point. He appoints the PM. Next point. He appoints the PM and COM. He appoints PM and COM. Hey, what is COM? Council of Ministers. PM and COM. क्या? President कैसा मना कर सकता है? He is the leader of the majority party, मतलब करना ही पड़ेगा ना. President थोड़ी अपना पॉकेट से उठा के. He appoints the PM and his council of minister. अच्छा बोलिए. बार-बार. मुझे डर लग रहा. सर. मैं दिखाऊं. सर आपका बाइसेप्स. अभी कल ही ऑर्डर करके बनाया. सही तो बिल्कुल तेरे लिए तो पूरा मैं 4 पैक्स भी बना रहा हूँ. वो भी ठीक है. 2 तो इधर है पीछे तो. Let us go to the next one. Thank you for the wonderful compliment. हाँ जी. सर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आई मीन कोई सीएम है जो स्टेट का काम अच्छे से कर नहीं रहा है तो उसको प्राइम. That is the emergency. वो मैं करता हूँ. अभी नहीं. अच्छे से क्यों नहीं कर रहा? उसको पैसा तो दे रहा है. You know the comedy what has happened in Maharashtra. Although I was traveling returning from Bangalore, Modi was in Mumbai, is it, for some work? Mumbai and Pune किधर ही तो आए थे. And that is the time both the Thakres have gone to Ayodhya. They were not in Bombay, I think. How smartly this Uddhava and his son has gone to Ayodhya. उधर जाके वो लोग क्या statement छोड़ रहा है? हम लोग अयोध्या आने के पीछे कोई politics नहीं है. फिर नीचे से मैं सबटाइटल्स डाल रहा है. राम ने उनको व्हाट्सएप किया था. आजा. मतलब प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू बॉम्बे एंड महाराष्ट्र एंड दीस टू गाइस हैव साइलेंटली हैव गॉन टू अयोध्या. नहीं वो अलग है. Why I'm saying whenever the prime minister lands in any particular state of the country, it is an official duty of the CM to go and receive the prime minister of India, whoever it is. But then you go to Kolkata, you go to Punjab, जब प्राइम मिनिस्टर साहब उधर गए, इन लोग का सीएम तो गायब ही रहता है. और ऊपर से पंजाब में जो हंगामा वो सबको मालूम है ना. Why I'm saying they do not respect the constitution. They have a hatred. मतलब indirectly they are hating Modi, but indirectly they are hating India only. देखो, you hate any person or love, that is different. But whatever post he is organizing, he has to. An IPS officer is not ready to salute the CM because CM and he has been his classmate. And CM एक टाइम पर बहुत बुद्धू रहा करता था. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. एंड उधर का IPS ऑफिसर बोलता है ये तो मेरा पेपर से कॉपी मार के पास हुआ और वो CM है, मैं क्यों उसको सल्यूट करूँ? No, he has to salute him. Why? It is for the office of the respect that he is holding. कितने नालायक हो गए. अभी क्या करें ना, हमारा इंडिया का ही एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा है जो खुद अनपढ़ है. हो सकता है. बिकॉज हमारा मिनिस्टर्स, हमारा कुछ सीएम्स इंडिया में जो रह चुके हैं, जो नेवर दे हैव गॉन टू स्कूल, बट देयर रूल वाज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन रूल टिल डेट. सो पर्पसली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है एजुकेशन इज नॉट अ बिग क्वालिफिकेशन. दैट इज व्हाई हमारा जो भी बच्चा पढ़ाई लिखाई में जरा वीक है और बाकी राजनीति में स्ट्रॉन्ग है, और मैं उनका पेरेंट्स को बुला के बोलता हूँ बस इनको एक ही सब्जेक्ट सिखाइए, पॉलिटिक्स.
Politics and politics. Politics. But to be nowadays, it is not so easy. Yesterday I was explaining in which branch, Koperkena only. We have a minister called S. Jaishankar. Foreign minister. Yes, he is neither a member of Lok Sabha nor a member of Rajya Sabha, but he was appointed as EAM by Modi. Why? External Affairs Minister. He has served out of his, I think, 50-year-older, 35 years he has served for India in different countries, including Japan, Russia, even in Pakistan he has served for India. He is an external minister today. And let me tell you, once he has taken the external minister, he has to prove his membership in next 6 months. Although Modi ने उनको appoint तो कर दिया, but he has to get elected for any Lok Sabha, वरना उसको निकाल देंगे. But then he is so successful. Did I not say going to London in front of the British people press? He has told openly what the British has done. Very few have this ministry. And अभी ये जो Muslim nation is creating some trouble to India, he next day only opens a press release. कि मुझे हमको मालूम है जो मिनिस्टर ने जो आपके प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बोला है, हम लोग उसका एक्शन ले रहे हैं, and you don't have any rights to speak against it. Although some Muslim nations are threatening कि हम oil नहीं देंगे, पेट्रोल नहीं देंगे, हम लोग बोले ठीक है, हमारे यहाँ से अगर wheat नहीं पहुंचेगा, आप रोटी और वो जो खाते हैं ना, वो क्या करेंगे? पेट्रोल पी लो. India has closed the export of wheat to certain countries. Pakistan. हाँ, मतलब क्या है? इंडिया ने डायरेक्टली नहीं किया है. इंडिया ने बोला है कि हम लोग ओपन करेंगे, बट थोड़ा टाइम दो. अगर इंडिया अगर उनके तरफ बोलता है कि हम लोग अगर ऑयल नहीं देगा, हम लोग ठीक है ना, हम लोग तुमको wheat नहीं देगा, फिर देखो. हाँ. So India is in such a dominant position, all thanks to the whose office? The presidents, because he represents the power of the nation. Let's proceed. Next point. He also appoints. You sit down. So I have a doubt that although Islamic have that readiness, they won't give us. But India is also getting Oil from different countries. हाँ, मेक्सिको से मिलता है, रशिया से, हर जगह से. उनको ऐसा लगता है कि इंडिया के ऊपर वो लोग प्रेशर डालेंगे. बट इंडिया उनका पूरा क्या बोलते हैं ना, पूरा बाप दादा को याद करवाएगा. चलिए. Let us write the last point. ओए, last point लिखो. What time point? You bite the time only. और कुछ नहीं. He can also appoint. He can also appoint Attorney General. Careful with the spelling. Attorney General. Achha. I'll tell it. Governor. Attorney General. Attorney General. Governor of the states. Keep writing. I'll tell you who is it. Governor General, Attorney General. उसके बाद क्या बोला? Governors of the states, Supreme and High Court judges. सब कमा डालते जाओ. Supreme and High Court judges. And the last point. Supreme and High Court judges. Last point. He can declare state emergency. He can declare state emergency. He can declare state emergency in case of a constitutional failure. अच्छा ये constitutional नहीं चाहिए. He can declare state emergency and controls the UT, Union Territories. And border areas. मैंने बोल दिया यूनियन टेरिटरी. अच्छा है ना, हमारा क्लासेस का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है. हाँ बिल्कुल. तो अपना मुंह बंद कर. Let us go to the next heading, B or 2. Main heading, executive हो गया. You write legislative powers. Because especially I'm giving all these points to your batch only. I'm not given to any of the batches where I'm teaching this. मैंने उनको openly ऐसे explain करके छोड़ दिया. No, you don't need to thank me. You can thank me in a different way. Legislative powers. Marks तो मैं कभी नहीं पूछता. नहीं, chocolates मैंने.
Justice चुप चुप बैठो हाँ नहीं चुप मत बैठो मेरे से बात करो but one by one बात I never ask you to keep quiet कभी बोला Being disciplined. You are best, sir. thank you but your blessings and your good wishes अरे गांजा मांग रहा है. मैं गांजा के वो उसका चपाती legislative pass Sunday we are having test. this Sunday That's June 27. I'll help you don't worry thank you अरे सर आंसर बताना सर. हाँ बहुत जरूरी है मैं आंसर क्या क्वेश्चन का एक फुल स्टॉप ही नहीं बताएगा legislative pass point number 1 Yes. he inaugurates point number 1 he inaugurates legislative pass this is the word he inaugurates ऐसे लिखने का हाँ मैंने लिख दिया he inaugurates लिखो सर बताता ना बता. हाँ लिख रहा हूँ ना UGRATRA Yes. he inaugurates the first session of the parliament लिखो ऐसे क्या बोल रहे हो write down he inaugurates the first session of the parliament welcoming welcoming the PM welcoming the PM and COM after general election after the general election second point अभी बाद में मुझे मेरा नोट्स कंप्लीट बाद में आप लोग के साथ ही हूँ second point he has the power मैं पहले बार नहीं बोलूँ तो फिर लिखना to summon और prorgue मैं लिख रहा हूँ स्पेलिंग भी सब वॉल्यूम में है the houses of parliament HOP houses of parliament आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत लिखो फुल फॉर्म लिखो he has the power to summon or prorgue the houses of parliament I'll explain write the next point he can dissolve the Lok Sabha next point he can dissolve the Lok Sabha before its expiry date समझा ओके मानना थोड़ी बात before its expiry and can also order fresh elections and he can also order fresh election last point for the same his assent next point is assent मतलब उनका signature बोलने का तरीका आप लोग का इंग्लिश इतना इम्प्रूव है कैसा हो गया मैं एक हफ्ता का बॉम्बे छोड़ के गया है ना रॉकेट से his assent is most important तुम जरा लिखिए his assent किसका कौन सा प्रश्न सर ये पीछे मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना और सुनना भी नहीं तो सचिन तेंदुलकर एक मिनट वैसे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोट पे सिग्नेचर नहीं करता दैट इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई का जी पीछे भी रॉन्ग बात है सर सबके बारे में गूगल में एक मिनट सबके पास गूगल है तो तू क्या कर रहा है गूगल में कुछ स्पेशल किया क्या ये मास्क को ऊपर चढ़ा मैं हिस्ट्री के अंदर सर्च कर रहा था सिविक्स के बीच में भाई साहब हिस्ट्री सर्च करता है हिस्ट्री के बीच में फिर क्या फिजिक्स पढ़ता है फिर बाद में हिस्ट्री रीड करता है नहीं सर वैसे नहीं किया राइट डाउन गलत कुछ नहीं बोलो देखो हाउ इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स आर वेटिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एंड दीस दैट्स मैं देख रहा हूँ ये लड़कों का नजर है his assent is most important for a bill to become a law
a bill to become a law. बहुत जरूरी है ना आकांक्षा? देखो वीडियो 1 मिनट ऑफ किया तो भी इन लोग का नजर है। Yes, sir. ये स्कूल में मिलेंगे ना, इनका पैर तोड़ दो। इट्स ओके, मैं उसका बॉडी के अकॉर्डिंगली वो बॉडी से। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज द पैरा, चेंज द पैरा। चेंज द पैरा। President can also issue the next point या पैरा whatever लिखना। He can also issue ordinances. What is this? मैं लिखूं, वो explain करूँ। लिखते ही तुरंत He can explain। also. He can also issue ordinances which are temporary laws, issued by president in times of national emergency. Sir, temporary issue the president. In times of national emergency. लिख तो रहा हूँ, फिर काय का तू मेरे से आगे बढ़ रहा है? Why can't you? You are a वो क्या खानदारी है क्या? आंख बंद करके बैठा। अपना पत्नी की आंख According to Mahabharata, Dhritarashtra. हाँ नहीं हम थोड़ा नया महाभारत को लिखेंगे और नेक्स्ट टाइम पूछेगा Modern नहीं। Mahabharata. I was teaching 9th ICSE Ramayana and Mahabharata. They are very happy with my knowledge of Ramayana and Mahabharata. हाँ मैं देख रहा हूँ। सर हमें पढ़ा दो। हाँ बिल्कुल, तू 9th में मिला नहीं ना मुझे। नहीं 10th में। फिर 10th का पोर्शन के 11th में पढ़ा। सर 9th में टीवी में आता था, क्यों नहीं देखा? हाँ 9th में नहीं हमेशा। हाँ, Hey everyone, be quiet. Listen. When I'm using the word summons and procuse, I said summon is a legal call. Anytime he can call the Prime Minister of India, I can ask the details. And the Prime Minister must produce the report within 14 days, 1-4. Oh, cover क्या नाम है? Sir अगर वो नहीं देगा, बोले क्यों नहीं देगा उसका बात? देना पड़ेगा, क्योंकि President is so important. मैंने उसे लगा B का word silent कर दिया. What will happen if it does? He has to. There might be some reason. क्यों नहीं दे रहा? Reason देना पड़ेगा फिर Prime Minister. देखो, although President President Kovind came to the post with the help of Modi only. In fact, Modi only picked up this person from somewhere far, and हमको जब सिर्फ President का नाम आया, suddenly फिर उसका पूरा details दिखा. But Mr. Modi only encouraged this President Ramnath Kovind. But once he becomes the president, Modi has to respect for his position. वो ये नहीं बोलेगा मैंने तुझे सपोर्ट किया, मैंने चला नीचे, वैसा नहीं कर सकता. In fact, if I can tell you, I can show you certain videos where the car of Mr. Ramnath Kovind is coming to that national day or any parade, and Prime Minister Modi is also standing. He cannot sit. जब वो कार से उतरता है, सल्यूट लेके फिर आके हाथ मिला के जाने के बाद मोदी नीचे बैठता है. हाँ, I can remember the first year when Modi became the Prime Minister of India. 2014. It was the National Day celebration, Independence Day. Rahul Gandhi openly told कि मैं attend भी नहीं करेगा और आएगा भी नहीं. Such a hatred for Modi. Rahul Gandhi president. नहीं, he has to come. Opposition में था ना वो. फिर उनका Italian मम्मी convince करने के बाद भैया आया तो सही बैठने के लिए, but the camera was plotting him. He was busily using mobile. मतलब there the Prime Minister is giving his speech and he is flag hoisting. He is busy playing his mobile. I don't know what kind of respect this man is going to give it to the future generation. But for last 2 days he is coming to the ED office, but he is creating so much chaos. But then I had shared one Insta video also where his mother, his granny also done the same thing. This is Indira Gandhi. Yeah. Means what? When Modi was called by the ED office, when he was the Chief Minister of Gujarat, he was interviewed for 3 days. 3 days. And 3 days he came alone carrying his own bottle of water. He didn't even take the chai from the ED. बोला नहीं आप questions continuously पूछिए मुझे break नहीं चाहिए. Continuously 8 to 10 hours he also interrogated because of Godhra incident जो गुजरात में हुआ था. Okay. He did not create such ruckus what this man is doing. Sir, why
अभी ये ईडी आके क्या है ना, जो ब्लैक मनी है कौन कौन जनरेट उसका, बिकॉज देयर इज अ बिग स्कैम, वो मैं बाद में समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है. बट देन वन थिंग आई हैव टू टेल यू, प्रेसिडेंट कमांड्स द हाईएस्ट रिस्पेक्ट इवन इनसाइड द पार्लियामेंट, ऑल्दो ही इज नॉट इनसाइड द पार्लियामेंट बट ही हैज द हाईएस्ट रिस्पेक्ट. क्यों? मतलब एनी टाइम पार्लियामेंट का सेशन को रोक सकता है और बोल सकते हैं कि कल मेरा स्पेशल लेक्चर्स रहेगा, मैं आके तुम लोग का सबका वाट लगाता हूँ. हाँ, ऐसा नहीं बोलेगा. He'll say, I have to address the parliament, so you please stop the session. I need to give some important message. Nobody can speaker ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं कल आप नहीं आ सकते, कल हम लोग शादी में जा रहे हैं. He has to be there. Then the next point that I'm saying, everyone knows what is a bill, correct? When I'm going to the next chapter, I'll explain. The bill passed by the Lok Sabha or by the Rajya Sabha, immaterial, it has to go to president. And president has the power to even return the bill also. If he thinks there is a change in the bill, he can return the bill to Lok Sabha. बोलेगा कि इसमें ऐसे ऐसे changes है, मुझे करके दो. First time the bill will come with or without the changes. Second time the president cannot return the bill. अगर नहीं भी किया, within 14 days the bill is set to be passed. देखो, पार्लियामेंट का पावर प्रेसिडेंट से भी एक जगह पर ज्यादा दिखता है, but initially president has the full right. Unless and until is absent, जैसे he beautifully explained to me, it is his consent and signature. देखो consent जहां भी रहेगा हम signature नहीं करता है, जबरदस्ती करना पड़ता है मैरिज सर्टिफिकेट में बेचारी को बाजू में देख के. फिर जब उनका Sir, so you told us that there is a president pending in the parliament. ओए quite. So what if that member has a worse health condition and can't able to? Thank you. But he can communicate to the president not directly, through the prime minister only. Prime minister is the link. I mean, you are a MP and I am the prime minister. There is one president. You can talk to president, no problem. But through me only. And similarly, president will also talk to you via me only. Because he is such a big officer. Anytime any minister cannot go and talk to him. In fact, he will not give the appointment at all. So why only through PM? You can't direct. PM is the link between the president and the council of ministers. अभी जैसा आपको आपका पापा ने किसी ऑफिसर से आपका इंट्रोड्यूस करवा दिया जहां आपका स्कूल में, आप हर टाइम आप डायरेक्टली उस ऑफिसर के पास नहीं जा सकते. आपका पापा जाके आपके बारे में बोले कि मेरा बेटा को ये तकलीफ है, फिर वो सुनेगा. बट आप एक बार गए, दो बार गए, बोले नहीं सॉरी मैं आपको नहीं पहचानता, आपका पापा को ही पहचानता. सो इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु नोज द प्रेसिडेंट थरोली. नॉट अभी जैसे देयर आर 550 मिनिस्टर्स इन द लोकसभा. अभी सोच लो अगर हर एक मिनिस्टर को अगर प्रेसिडेंट ने दे दिया, देन हर लोग सुबह उठ के ब्रश करके निकल जाएगा, चल मैं प्रेसिडेंट से. इट इज नॉट अलाउड बिकॉज ही हैज सो मेनी डिग्निटरीज. अभी इफ आई टेल यू इन बिटवीन द कोविड क्राइसिस और आफ्टर दिस Russia and Ukraine went with a war, not more than 7 countries dignitaries came to India. The foreign leaders, out of which prime minister met only one dignitary. It was Russian foreign affairs minister. बाकी सारा मिनिस्टर को हमारा नथुराम गोडसे या कुछ लोग मिलके बोला हाँ हो गया, अब मोदी बिजी है बाद में. So India is showing that much of power. China का minister without the invitation he came, and Modi that time was busy in what do you call it, in Gujarat, some political work. So he told that I want to meet Mr. Modi. He said sorry, आप बिना बताए आया, अभी he is busy, you come back later. देखो चाइना मिनिस्टर को हम लोग ने वापस भेजा. किस काम से आया, चाय में पी ले, निकल गया. नहीं प्राइम मिनिस्टर. बिकॉज अगर प्राइम मिनिस्टर के पास अगर इतना पावर है, इमेजिन प्रेसिडेंट इज वन स्टेप अहेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. So he has the full power. President बोलेगा जूता कैसे रखा जाए. क्या बस आप लोग से सेवा करने का. चलिए लेट्स प्रोसीड. You guys have any doubts? Swastika and Akansha? वही आ रहा हूँ ना. Next I'm saying ordinances. Now our country is in a war with a neighboring country. और इंडिया में सिविल वॉर चल रहा है. पार्लियामेंट इज सस्पेंडेड. देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर, देयर इज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट देन द प्रेसिडेंट इज रूलिंग. बट व्हेन द प्रेसिडेंट इज रूलिंग, एग्जिस्टिंग लॉ जो चल रहा है वो चलेगा, बट ही थिंक्स कि अभी एक नया लॉज लेकर आने का, सो दैट लॉज कैन नॉट बी पास्ड इन द पार्लियामेंट. अभी तो पार्लियामेंट बंद है, तो उस लॉ का नाम उन लोग ऑर्डिनेंस रखता है. ऑर्डिनेंस इसलिए है बिकॉज प्रेसिडेंट ने लाया.
and that will be for a valid for a period of only 6 weeks. 6 weeks only chalega. 6 weeks. फिर अगर ordinance अगर नहीं हुआ, he may improve or he may continue. But once the war comes to an end, once the parliament comes, ये same ordinance parliament में जाएगा, and it will be debated, it will be discussed. अगर वो अच्छा रहा, it can be converted into a law. If not, वो ordinance के बारे में लोग बात भी नहीं करें. वो तो सिर्फ emergency time के लिए use हुआ. Are you understanding? So that is why I am saying ordinance are which laws? Issued by the president when during national. समझ में आया? Why it is temporary? As long as emergency is there, ordinance रहेगा. उसके बाद अगर आपको ordinance पसंद आएगा तो parliament में जाएगा. If not, it will be ending there only. हाँ. Sir, is there any ordinance that became a law? Many times, I can't exactly tell me. अभी मुझे थोड़ा refer करना पड़ेगा. But many times it has been done. But many times it has not been done also. Okay, so we do not have any practical evidence, at least for the time being. Let's write the next sentence. अभी ये financial powers, judicial powers and discretionary powers. I'll mark it in the volume. Hey, we are going to page number 189 of your volume. That is legislative powers. Hey, that we have done, I think. Na? We have to do financial powers. So underline point number 1. 189. 189. Money bills, underline, introduced on the recommendation of president. 189. Second point, annual budget. Annual budget. Only underline the words which I am saying. Huh? Annual budget. Oh. 189 बोल के 4 दिन हो गया अभी तक 189. कानपुर का रहने वाला है नहीं ना annual budget, underline and underline the finance minister and then underline the president places. मतलब जो भी बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आएगा, बट ऑन बिहाफ ऑफ whom? अभी समझ में आया, उसके लिए मैंने थोड़ा उल्टा रिवर्स मार्क करवाया. नेक्स्ट, द एनुअल स्टेटमेंट every financial year on behalf of the president. And let us go to judicial power. Annual statement placed before the parliament on behalf of president. Bas, उतना ही मार्क. And try to use your own sentences. इतना बड़ा sentence लिखने का जरूरत नहीं. Judicial powers underline president not answerable to any court of law. मेरे पास बुक दे रहे भैया फ्री में बैठा टेक्निक तो एक मार्क्स करेगा तेरे. Next. ठीक है, so you mark it afterwards. No criminal suit. Underline initiated against him. Now, if you want to explain this, I don't know whether you understand this or not. As long as you remain in that students or any category, suddenly if I give any responsibility, usually sir has given me such a big responsibility, let me at least handle it, if not my best, to my level best. जब आपको एक responsibility shoulder में आ जाता, then you automatically become very intelligently. But you understand the president's office is something like that. He is the one important officer the entire world is looking. अभी for example, अगर मैं India का छोड़ दूं, whenever the American president is elected, ministers from all over the world call him and give him congrats. That is the respect. That is the respect the president of America commands. Like when this Joe Biden and Donald Trump drama was going on, but finally when Joe Biden was victorious, Modi called him personally, and he has to give him wishes to that. Similarly, whenever the president of India gets elected, even the ministers from different countries give him a personal invitation or a personal respect or a salute to him, because India and America are the two biggest democracies. But America का जो president है, he is the real ruler, और हमारा India का president है, ये nominal ruler. But यही difference. But respect तो दोनों को same ही है, correct? So whenever Indian president is appointed, he is respected all over India. That is correct. He is respected all over the world also. So you told that when the American president person becomes the president in America, so every minister of the world has to congratulate. Not necessary, but it is एक छोटा सा practice है. देखो, अभी when you go to a birthday or a marriage,
हम लोग बर्थडे तो दूर मैनेज जाते पहले हम लोग खाना का ही डिपार्टमेंट पहले दूर बट फिर भी जाके एक अरे भाई हाँ हैप्पी मैरिज हाँ ये सब खाना बना कि नहीं बना चल as if it's a formality correct but then country like India is putting a big pressure on America even today. You won't believe now American president is forcing Pakistan to sign for India in UNO. India is going to get the security permanent membership very quick. और पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है तो इट्स अ वेरी कॉमेडी. सिक्योरिटी काउंसिल मतलब क्या होता है? देयर आर 5 मेंबर्स जिसमें इंडिया को ही मेंबरशिप मिला था बट हमारा लवली नेताजी बोलते हैं नेहरू जी ने उठा के उसको चाइना को दिया. एनी टाइम दिस 5 मेंबर्स आउट ऑफ 5 4 आर सेइंग यस. If one person uses his veto वो भी आपको हाँ it can be cancelled. तो हमेशा जब भी कश्मीर का इश्यू आता था यूएनओ में रशिया हमारे लिए उसका वीटो पावर यूज करता था क्योंकि रशिया हैज अ गुड रिलेशन विद इंडिया. वीटो मतलब वो पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर सकता है. और इंडिया पिछले 10 साल से पूछ रहा है कि हमको भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप चाहिए बट अभी तक नहीं मिला. बट जो बाइडेन अभी इंडिया को खुश करने के लिए ये काम कर कभी सोचा है क्या अमेरिका इंडिया को खुश करने के लिए ऐसा इनडायरेक्टली कुछ काम कर रहा है? खुश करने के लिए कर रहा है ताकि वो उनको सपोर्ट कर रहा है. वो तो इनडायरेक्टली इंडिया से बेनिफिट उसको मिलेगा ही. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So this much amount of respect India is getting means India has gone to such a high level. अबे देखो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर में every country was crying for India. Do you think ये 15-20 साल पहले हाँ कभी इंडिया पूछेगा जा तेरा ओपिनियन तो हमको चाहिए भी नहीं. As if Imran Khan accidentally landed to Russia when the war declared. Yes, sir. बेचारा वो अपना दुनिया का बोलेगा इतना अनफॉर्चुनेट डे था जिस दिन मैं रशिया में उतरा उस दिन रशिया ने डिक्लेयर कर दिया एंड पूरा अमेरिका का गुस्सा इमरान खान पे ही निकला. हाँ इमरान खान गया क्यों? मुझे तो ऐसा लगा इमरान खान जाके रशियन प्रेसिडेंट को बोल रहा है डोंट वरी जितना आर्मी चाहिए जितना वेपन्स चाहिए हमारे आतंकवादी लोग के पास बहुत हम देते थे और हमारा आतंकवादी ज्यादा पैसा मांगेगा भी नहीं सिर्फ 3 वक्त का खाना दे दे वो वैसे ही बचेगा. देखो इंडिया का जो रूल है ना इट इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वेयर पार्लियामेंट इज सुप्रीम. अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है वेयर प्रेसिडेंट इज इम्पोर्टेंट. अभी ये जो ग्रेट ब्रिटेन है वो तो और भी उल्टा है. They have a monarchy parliamentary, constitutional parliamentary ऐसा बोलता है. Where queen is there, but the prime minister is also ruling. Queen will step in any time if she wants, but वो जो 70 नहीं 97 years की old है, पर अपना दिन गिन रही है, अपना husband गिन रही है, भगवान को ही मालूम. अभी हाँ नेशनल नहीं ये सब मैंने नहीं किया और मुझे करना भी नहीं. देखो आप एज अ सिटीजन पूछिए आई विल वेलकम यू बट यू क्रॉस योर 18 एंड पहला वो 18 होने के बाद एवरीवन मस्ट कास्ट देयर वोट. एज अ हिस्ट्री टीचर और अ पॉलिटिक्स टीचर यू मस्ट डू इट. देन यू विल फील तब तक बेचारा रहना भी तो चाहिए. So why I'm saying this, as he is asked, President of India is totally different from the President of America. President of America is the real leader. President of India is something a nominal leader. बस इतना ही difference. Let's proceed. Great Britain same is. ये थोड़ा different है. Great Britain and Saudi Arabia में जो rules है दोनों same rule. Okay है. But Saudi Arabia में नेम से के लिए भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना. तो किंग क्या नहीं. उधर प्राइम मिनिस्टर नहीं है. Let us go. फिर मैं बाद में बताता. Hey, you guys are understanding? Hopefully, Akansha and Swastika be a part of my class anytime. Although you guys are online, you have the full freedom to ask the questions like these guys are. Anytime? Online lecture. No questions now. Only answers which I am giving. Chupchap lik. Let's go to the judicial part. The president has the power to explaining criminal shooter. बाद में ये लोग ऐसे ही बोलेंगे. Power to grant pardons, respite, remission, punishment or to suspend. ये पूरा ब्रैकेट में डालता हूँ मैं पूरा एक्सप्लेन ही करता हूँ. To any person convicted for an offence. Bracket close. Now when I'm saying Supreme Court of India, you don't have to go. What is किसी के पास बैठो ना उनके साथ उनसे ले लो. If Supreme Court given a death sentence to a person in India,
President. No one has the power to challenge the judgment, but president can do it. But then it's not so easy to approach to the president. Abhi, I can tell you the person who has continued the attack on Indian Parliament. He was a professor from one of the Delhi college. I don't want to name him. He was given the death sentence. But unka family apna muh utha ke president ke paas gaya. But then the president will not take each and every case on his own. He will appoint some judges and lawyers and see whether that person is actually convicted or not. If he thinks that the person might be having some remorse feeling or any other, or he is not so much involved, he can make the death sentence into a life imprisonment. इतना ही कर सकता है. But इसका मतलब ये नहीं कि कल ही आपको बाइज्जत बरी कर देगा और बाहर आके बोलेगा प्रेसिडेंट ने मुझे निकाल है ना. So grant pardon मतलब वही कर सकता है. Respite उसका punishments कम कर सकता है. Remission अगर आपको 50 साल या 20 साल के लिए मिला उसको और एक कम कर सकता है. But वो भी president का discretion पे है. Nobody can force. Sir, chairman नहीं करेगा. ऐसा नहीं 15 साल में chairman नहीं करेगा. नहीं, that is different. US का president तो real minister है ना, हमारा prime minister की तरह. सर, हाँ. सर प्रेसिडेंट को राहुल गांधी को डेथ सेंटेंस देना चाहिए. अच्छा. सर लाइफ अरे मजा आएगा. किसका? एक मिनट. हाँ. कौन बोला? 14 years करेगा तो life imprisonment हुआ. Till he is alive, he have to be inside the jail. Only उसका वो क्या उर्दू वर्ड बोलता ना जनाजा बाहर आएगा. 66 years करेगा तो फिर 14 नहीं वो बेचारा ऑलरेडी मर रहा है और उसको बोल रहा है कल उसका डेथ है तुमको बाइज्जत बरी करने ही करेंगे जिंदगी भर आपको रहना. भाई साहब वैसे भी मैं कल मारने वाला फिर भी. And whenever if you have seen the judge, he has given the death sentence, he breaks the nib of the pen. तो तुरंत हमारे बच्चा को मैंने बोला है कि so that he doesn't write any other death sentence with that pen. तो तुरंत बच्चा बोला और एक पेन लेके लिखने बोला. Because it is the capital punishment, many countries have stopped it. बोलते हैं कि if you are born free, any government do not have the right to kill you. Although you might have done the biggest punishment. Like you go to London, you might be the criminal, you might be anyone. London police आपके ऊपर हाथ भी नहीं लगाए. They will not beat you. उनका rules वैसा है. मतलब they will inquire you, they will ask you, they will inject one small serum into the body so that you start telling the truth, but they will not beat you. But जबकि हमारा मुंबई पुलिस पहले मिलते ही चला जाता. Oh guys, ओए हाँ वो तो डिफरेंट ही है. मिडिल ईस्ट टाइप से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया आज भी स्टोन टू डेथ पनिशमेंट चालू है. फ्राइडे नमाज के बाद a person who is convicted and given the death sentence, and everyone who comes out of the masjid or the one, they are given big stones and they will beat that fellow till he does not die. That is kingdom of Saudi Arabia. Saudi Arabia. इंडिया में एटलीस्ट ये टाइप का पनिशमेंट ना सुना है ना सुनने वाला है. ये जो छोटा मोटा एक दो जन को मिला है उसके लिए भी लोग इतना अप्रोर करता है जैसे कि बहुत बड़ा महात्मा है. जिसने गलत किया होगा उसको ऐसा पत्थर मारे. सबको नहीं, जिसने जजेस ने पनिशमेंट दी. ये बेचारा अपने बारे में अच्छा ये मूवी इम्पीचमेंट वो अलग है. हाँ बिल्कुल. हाउसेस को नहीं देगा. He will study the file of the criminal, he will understand it and he will sign the order by saying कि I am giving the. एक पर्सन मेरे से डाउट पूछ रहा, 4 पर्सन आपने बात करा. But what is the issue of me? सर करप्शन की बात कर रहे हो. Yes. पहले तू करप्टेड मत हो. चलो. नहीं सर मैं करप्टेड. Hey, I'm going to discretionary pass now. Carry on. The President of India enjoys discretionary. Underline first appointment of PM in a situation, open bracket. No single party has a clear majority, close bracket. Appointment of PM in case of a sudden death. Next, ruling party has lost its majority. Ruling party majority wala udhar likho no confidence motion. Did I explain no confidence? I'll explain in the next chapter. When but फिर भी. Then it is a discretion of the president. Underline either dissolve the house or any party prove its majority on the floor. Discretion का मतलब क्या? On his own, nobody can. Let us go to emergency power. The president can proclaim, underline, state of emergency. Point number 1.
national emergency, underline, danger of foreign aggression. Second, breakdown of constitutional machinery, underline, in a state if it has broke down there is a deadlock. उधर लिखो state emergency, ऊपर लिखो state emergency. So what is deadlock? हाँ जी, you जरा लिखना पहले मैं समझाता हूँ. Financial emergency is setback to, underline, financial stability or credit, इतना underline करो. अभी ये जो breakdown of constitutional machinery, what is deadlock? अभी महाराष्ट्र में 3 पार्टी मिलकर रूल कर रहा है. One is शिवसेना, कांग्रेस एंड एनसीपी. अभी ये तीनों पार्टी के बीच में डेडलॉक है. एक पार्टी बोल रहा है मैं करेगा, दूसरा पार्टी अभी तीनों का डेडलॉक है. तो गवर्नर क्या करेगा? ही विल राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट सेइंग कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, यू काइंडली कमेंट रूल.